चीजें आ जाती है, जैसे कॉम्बिनेशन वाले, जैसे एक रेक्टेंगल नीचे ट्रायंगल आ गया, तो ठीक जब है। दूसरे का राइटिंग लीवर जब हम मतलब जो लीवर है दूसरे का ऐड करते हैं, तो जैसे अगर ट्रायंगल का पूरी हाइट 6 मीटर्स है और हमारा ड्राफ्ट 8 मीटर्स था, तो मतलब ट्रायंगल तो पूरा सबमर्ज्ड है, तो रेक्टेंगल के लिए हम उसकी पूरी हाइट ले लेंगे 6 प्लस फिर वो d/2, ऐसा। एक मिनट दोबारा बोलो। सर जैसे रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल के नीचे वो है ट्रायंगल, तो अब हमें वो लेना था ना उसका जो लीवर, जो जैसे दूसरे वाले का लीवर लेंगे हम रेक्टेंगल का। हाँ जी, तो लेट्स से वही वाला जो कल वाला एग्जांपल था d/2 हो गया, मतलब रेक्टेंगल का तो हमने वहां से मिल लिया जितना ड्राफ्ट वो पानी आ रहा था उसके ऊपर। करेक्ट। और जो ट्रायंगल की जो पूरी हाइट है, क्योंकि वो पूरा सबमर्ज्ड है, तो पूरी हाइट ऐड कर लेंगे उस लीवर में। सर जो कल एग्जांपल नहीं बताया था आपने, एक सेकंड मैं वो ये सर ये क्वेश्चन ऐसा है सर, अपर बॉडी के राइटिंग लीवर के लिए जो जब राइटिंग लीवर कैलकुलेट करेंगे तो विद द ड्राफ्ट वी विल टेक द फुल लेंथ ऑफ द लोअर बॉडी, इज इट सर? दैट्स राइट। ओके, बस यही पूछना था सर, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि ट्रायंगल का भी 2/3D और उसका दोनों के वो वाले ऐड करने हैं। चलो ठीक है, ओके सर। नहीं, ओके the total distance, so कहने का टोटल मतलब total distance, so that means अगर ये है और ये एक शेप है उसके नीचे, और जो पानी है सपोजिंग यहां तक है, तो जब रेक्टेंगल का मैं लूंगा PQRS, सो उसका GC का डिस्टेंस फ्रॉम कील, सो ये पूरी की पूरी हाइट प्लस ये जितना भी यहाँ पे था सिंकेज उसका हाफ. So if this supposing is x, then this will be x/2, and the distance of the GC from keel will be the total depth d plus x/2. ओके सर, प्लस d, x/2 प्लस d, ऑलराइट सर। x/2 plus d will be the lever of this. Lever is nothing but the distance from that point that you take. ओके सर, ठीक है सर, बस यही था। यही था. हाँ जी। Any other doubt in the previous chapter? Okay, so we are moving on to chapter 21, and that is angle of flow. Angle of flow. Angle of flow, basically what we talk about is that vessel is originally she is stable equilibrium, so her GM is positive. Now as she keeps consuming the liquids from underneath, the G keeps rising. So therefore, if this be the center of buoyancy, this be the center of gravity,
and the meta center is there along this line somewhere. So originally, let us say the meta center is here. It can be anywhere. It could be here also. So this is a stable equilibrium and the GM is positive. But if I keep consuming my liquids from below, the G will keep rising. So the G keeps rising, the M keeps falling. So at a certain point in time, the G1, the new position, and the meta center, they coincide. When the G and G1 and the M coincide, this position is known as neutral equilibrium. This position is known as stable equilibrium. And because I don't take a corrective action at this stage, the G keeps rising and it will come here to a position G2. And that is called as unstable equilibrium. So my G2 is greater than M, and so therefore my vessel is in an unstable equilibrium. Since my vessel is in an unstable equilibrium, so therefore this vessel will have a tendency to topple over. And so therefore she starts to topple over onto any one side. The moment she starts to incline, the center of buoyancy will shift out to a new position, Bravo 1, and the meta center will start to rise. And at a certain point in time, the meta center will come and coincide with Golf 2. So this becomes meta center again with G Golf 2. And this angle now, which is formed, this will be called as angle of LOL. That means that angle at which the GM becomes 0 again is known as angle of LOL. The GM is 0 again. Again, if I keep consuming my liquids, again there will be a negative GM and I will again topple over to another angle of LOL. And like this, I'll keep going to a new angle of LOL each time. And finally, at some point in time, my vessel will tend to capsize. And therefore, that is a dangerous situation for an angle of LOL. So, if I am at an angle of LOL, I am in a dangerous position because I can capsize anytime. Now, the reason that I am at an angle of LOL means my vessel does not have a righting lever to come back. So there is no positive righting lever. Positive righting lever means vessel to become upright. So therefore, the GZ formula is also called as wall-sided formula. So wall-sided formula is basically GZ is sine theta into GM
plus half bm tan square theta. This is called as a wall-sided formula. This gives us the value of writing lever using this formula. At angle of LOL, the writing lever is not there, is 0. So therefore, at angle of LOL, GZ is 0. If GZ is 0, this equation is equal to 0. So sin theta into GM plus half BM tan square theta is equal to 0. If this is equal to 0, that means either sin theta is equal to 0 or the bracket is equal to 0. One of the two. Then only is that equation possible. If sin theta is equal to 0, sine of 0 is 0. That means theta is equal to 0. But we know that theta is not equal to 0 because vessel is at LOL, angle of LOL. So theta cannot be equal to 0. If theta is not equal to 0, that means this bracket is equal to 0. Therefore, GM plus half BM tan square theta is equal to 0. Or tan square theta is equal to minus 2 GM upon BM. Or tan theta is equal to under root of minus GM upon BM. Here GM is the minus initial GM which caused the vessel to go to an angle of LOL. Here GM is the minus GM initial which caused the vessel to go to an angle of LOL. So therefore, जब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव बनेगा and therefore you can find out the under root of that. Any doubts so far? यस सर। सर आपने अभी कहा था कि एंगल ऑफ लोल 0 नहीं हो सकता, बट यहाँ पे G2 एंड M है, यहाँ पे जो डायग्राम में है, यहाँ पे तो सर 0 है ना एंगल ऑफ लोल। हाँ, तो the GM at angle of LOL is 0, but the initial GM which was the GM before the angle of LOL was reached is this one. ओके सर, ओके, ठीक है। Because मेरे जहाज का GM नेगेटिव था इसलिए मेरा जहाज टेढ़ा गया। Is that okay? यस सर, यस। और कोई डाउट?
सर ये बस लास्ट वाला बताना, GM इज इक्वल टू माइनस GM इनिशियल है, तो ये कहाँ से आया था, रेलेवेंट कैसे हुआ था? ये रेलेवेंट इसलिए हुआ क्योंकि मेरा जहाज नेगेटिव GM पे आया. That means that stage from G1M to G2M, that is the stage that caused my vessel to go to an angle of loss. So this stage is what I'm talking about. This stage. So during this period, my vessel went to an angle of loss thanks to this negative GM. Okay. No. That's the meaning which I'm trying to convey. Okay. Having understood this formula, now we go back to exercise 15, first chapter, question number 15. Let's come back to question number 15. जो हमने छोड़ दिया था. We had left that question. So what does the question say? I'm on question number 15 of exercise 15. It says homogeneous log of square cross section has a RD of 0.72. Prove by calculation. Please silence your mics. So I draw a diagram. So homogeneous log, square cross section. This is a square cross section of a log. Let the one side of the log be x. Then this is also x. Let the length of the log be L. Let the log float in water, salt water, at a draft D. This becomes the keel. So एक चीज तो हमें समझनी है कि इस क्वेश्चन में डेटा बहुत कम है. तो जब भी डेटा बहुत कम है किसी क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन आपको बेसिकली बेसिक्स में लेके जा रहा है. इट विल टेक यू टू फंडामेंटल्स बिकॉज डेटा बहुत कम है. वी हैव टू प्रूव by calculation that it can float with one side of the square parallel to the waterline. मतलब ये ऐसे ही फ्लोट करेगा जैसा नजर आ रहा है, यानी कि ये टॉपल ओवर नहीं करेगा. यू हैव टू प्रूव दैट कि ये टेढ़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर ये टेढ़ा हो जाएगा तो ये साइड इसके पैरेलल नहीं होगी.
Is that okay with everybody? So मुझे ये प्रूव करना है कि ये ऐसे ही फ्लोट करेगा. तो बेसिकली KB of this log will be how much? D/2. D/2. Okay. KB is D/2. BMT will be IT upon V. Box shape vessel. So using the shortcut, B square by 12D. Breadth is X. Are you with me on this? How I've got this? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So I know the formula KB plus BMT is equal to KG plus GMT. We are familiar with this formula? Sir. Yes, sir. Okay. So ये मेरे को आ गया, ये मेरे को आ गया KG कितना है? Sir, X/2. क्यों? अगर log यूनिफॉर्म है तो नहीं. Give me a better answer. सर स्क्वायर शेप है, ज्योमेट्रिक सेंटर लेंगे. नहीं, something better. अगर लॉग को फ्लोट करना है विद वन साइड. नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं. ये क्यों? Yes. Correct. Because the question is saying it is a homogeneous log. Homogeneous का क्या मतलब है? That the weight or the mass is spread evenly all over on the log, along the length. The mass is uniform, spread, uniformly spread all along the length of the vessel, length of the log, sorry. That is called as a homogeneous log. So, because it is a homogeneous log, Kg will be x/2. Agreed? So, therefore, let's put the values. D/2 plus x square by 12D is equal to x/2 plus GMT, or GMT is equal to D/2 plus x square by 12D minus x/2. Agreed so far? Yes, sir. Okay. Now, for this log to float upright like this, the GMT has to be greater than equal to 0 for the log to float upright. Agreed? Yes, sir. That Yes, means this value should be greater than equal to 0 for the log to float upright. ठीक है? Is that okay? Yes, sir. Yes, Okay. sir. All right. So यहाँ तक तो ठीक आ गए हम. अब बेसिकली मेरे पास एक इक्वेशन है
जिसमें दो वेरिएबल हैं, x और d। अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मेरे को एक इक्वेशन और चाहिए। क्वेश्चन है कि वो इक्वेशन मुझे कहां से मिलेगी? Where will I get that equation from? So density related to density. तो क्या करूं मैं उसको, डेंसिटी को? What shall I do? What shall I do? सर क्या पूछा आपने? मैंने क्या पूछा? मैंने ये पूछा कि एक इक्वेशन x और d दो वेरिएबल की ये रही, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, वो इक्वेशन कहां से मिलेगी? वो क्वेश्चन मुझे वो इक्वेशन मिलेगी डेंसिटी से, लाइक व्हाट सर वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे। कौन सी वॉल्यूम को? कौन सी वॉल्यूम को इक्वल करोगे? डिस्प्लेसमेंट को सर। डिस्प्लेसमेंट। सर अंडर वाटर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू लॉग की वॉल्यूम। अंडर वाटर वॉल्यूम इनटू, सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट करोगे। weight of the log is equal to weight of water displaced by it. Agreed on it? सर Weight of the log is volume of the log into RD of the log. Agreed? Yes, sir. Okay. Weight of the water displaced by it, यानी कि अब मैं अंडर वाटर वॉल्यूम पे घुस रहा हूँ, is equal to अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ द शिप, ऑफ द जो भी है, into the density of the water. The density of the water. So volume of the log पे चलो, length into breadth x into height x into RD of the log 0.72 is equal to underwater volume, length into breadth into draft into density of water, assume salt water. LX gets cancelled. X is equal to something D. Tell me the value of something. So 1.4236. 1.4236, तो उसको 4 ले लेता हूँ. So x is equal to 1.424D. ठीक है, is this okay? यहाँ तक is all right? सर एक बार वॉल्यूम ऑफ द लॉग बता दीजिए. Volume of the log. So volume of the log is L into length into breadth into height. Okay, so we have taken height also as x. Okay. वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में मुझे. It's a square cross section.
Okay, sir. It's given in the question. Square cross section. It's a square. ये सब x है. Okay, sir. Understood. ठीक है. अब ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई विद 2 वेरिएबल्स. इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें. सो d/2 प्लस इसको रिप्लेस कर रहा हूं 1.424 d होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12d माइनस इसको रिप्लेस कर रहा हूं 1.424 d divided by 2 is greater than equal to 0. और इज इक्वल टू GMT कर देता हूं अभी. इज इक्वल टू GMT. So this will be equal to something d plus this will be equal to something d minus this will be equal to something d. This is equal to GMT. इन सबको टोटल करो and tell me the value of GMT is equal to something d. Tell me the value of something. Sir, negative 0.043. Negative 0.043 d. Is everybody getting the same answer? Yes, sir. Yes. ठीक है. So basically D is positive. Draft will always be positive. That means my GM is coming as negative. Since GM is negative, hence the log is in unstable equilibrium. And will therefore go to an angle of lol. Hence, the log will not float with one side of the square parallel, oblique, perpendicular to the waterline. अगर हम पैरेलल की बातें कर रहे हैं तो हम ये दो साइडों की बातें कर रहे हैं. अगर हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो हम इस साइड की और इस साइड की बात कर रहे हैं. So the question can be parallel,
prove that the log will whether it will float with one side of the square perpendicular to the water line. Your solution is going to be the same. It is just a variation of the question. ये समझ में आ गया last part? Yes sir. So अगर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर भी आ गया तो बेसिकली इस साइड की बातें कर रहा है, परपेंडिकुलर के में ये साइड, पैरेलल में ये साइड की बातें कर रहा है. तो क्योंकि नेगेटिव होगा ये, जहां ये लॉग ऐसे चला जाएगा टेढ़ा, जब ये टेढ़ा जाएगा तो ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा और ये पैरेलल नहीं रहेगा. Any doubts? Okay. Add one more variation to the same question. एक पार्ट और ऐड कर रहा हूं अब इसमें. Not given in the question, add it. Calculate the angle of lol to which this log will go. Calculate the angle of lol to which this log will go. So अब आप एंगल ऑफ लॉग का फॉर्मूला लिखोगे. tan थीटा इज इक्वल टू -2gm अपॉन bm. ठीक है. gm is -0.043 d. bm is x square by 12d. x को हमने रिप्लेस किया था 1.424 d होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12d. इसकी ये वैल्यू कितनी आई थी? हाउ मच टाइम्स d वाज दिस? ये वाला दूसरा वाला टर्म ये कितना आया था? 0.169 d. 0.169 d पॉजिटिव थी. यस सर. ओके. अब आपके पास दो वैल्यूज हैं, इस फॉर्मूले में डाल दो एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ थीटा. degrees. 35.5 degrees on either side, because this can fall on either side. किसी साइड भी जा सकता है ये. Is this okay with everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, the answer in the back for GM is coming -0.024 m for the first part. Sir, वो D की वैल्यू वो इसलिए है क्योंकि मैंने ये D के टर्म्स में लिया है, उसने वो X के टर्म्स में ले लिया. ओके सर. मैं इसको X के टर्म्स में, मतलब D इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाय 1.24 कर देता और फिर उसको रिप्लेस कर देता, तो वो भी बात एक ही है.
So it depends on the value of GM you're taking in what terms. That is point number one, right? Okay. Point number two is that I can change the density of the water to 1. Situation will change again. Okay. I think in the book they have solved with the X, so that's why the answer is coming Correct. is different. Why? But the RD is same, so okay. RD is same. Yeah. So basically, these are the types of variations which can be taken. Okay. Okay, sir, understood. Okay. Let me give you the question, which I'll be doing tomorrow. I'm giving the question today because this is a very popular question. बहुत बारी आया हुआ है. It's a theory question. So I'll just narrate the question to you. You are a chief officer of a vessel, of a general cargo vessel. And your vessel is at sea. Your vessel is at sea. One fine morning, you find that the vessel is listed 20 degrees to starboard. Are you in a dangerous situation? Are you in a dangerous situation? What action would you take? And why? What action would you take? And why? सर इसका तो ये है ना, वी आर इन डेंजरस सिचुएशन एंड वी विल शिफ्ट फ्रॉम अपर स्टारबोर्ड टू लोअर पोर्ट होल्ड. Shift what? सर कार्गो या कुछ भी सर. सर अपर से अपर टू इंडेक्स स्टारबोर्ड से लोअर लोअर होल्ड पोर्ट साइड, या फिर लोअर पोर्ट में पानी ले लेंगे, ऊपर से कुछ निकाल देंगे. कार्गो को छू सकते हो जहाज पे? We will adjust with the ballast from the starboard to port. मोटा मोटी बात तो ये है कि क्या जहाज पे आप कार्गो को टच कर सकते हो? Do you have the No, sir. do you have the legal authority to touch the cargo? So अब सोचो कि do you have the legal authority? कोई है आपके पास में कोई अथॉरिटी कि मैं छू सकूं? इम्पोर्ट तो मैं छू लेता हूं, इम्पोर्ट में मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है, राइट? इम्पोर्ट क्या अथॉरिटी है मेरे पास कि स्टोरेज प्लान ये है, ये स्टोरेज प्लान मैं बनाता हूं, मैं हूं चीफ ऑफिसर, ठीक है? तो ये मेरी अथॉरिटी है, तो मैं अपनी वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं वो डंके की चोट पे कहता हूँ भैया ऐसा है, ये स्टोरेज प्लान चलेगा, बाकी सब गए बाहर. ये सुनो कि मेरी जीएम ये होनी चाहिए, मेरा ट्रिम ये होना चाहिए, मेरा फॉरवर्ड ड्राफ्ट ये, मेरा हाफ ड्राफ्ट ये, मेरा प्रोपेलर इमर्शन, बात खत्म.
So in port you are able to do all this, but at sea अब आप कार्गो को छू नहीं सकते क्योंकि वो कंसाइनी जो है वो तो राशन पानी लेके आपके ऊपर एक क्लेम ठोक देगा, and claim will be as large as much more than the cost of the vessel itself. That is evident from what you just saw in Ever Given. The claim which has been thrown on the owners is far times more than the cost of the vessel itself. Agreed? Yes sir. 900 to 600 आए हैं अभी. हाँ, तो अभी तो चल रही है नेगोशिएशन. तो पॉइंट क्रॉस के कार्गो को तो आप छू नहीं सकते क्योंकि आपकी लाइबिलिटी आपकी बन जाती है. जैसे ही छूओगे कार्गो को, लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी. उसके बाद कार्गो को कुछ भी हुआ, एक रत्ती भर का भी डैमेज हुआ ना, तो वो कंसाइनी जो है वो सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देगा कि भैया मैंने तो लोड करके भेजा था शिपर ने और मेरे तरफ से ओके था, वो आपने दरिया में छू दिया, आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. तो ये तो कर नहीं सकते आप जो अभी तक बोल रहे थे. तो कार्गो को टच नहीं कर सकते. अब आपको खाली ये देखना है कि सबसे पहले तो ये आपकी लिस्ट सडनली ए वन फाइन मॉर्निंग में कैसे आई. अभी तक तो अपराइट था सारा कुछ. तो सबसे पहले तो आप यही चेक करोगे ना कि भाई मैंने कोई ये नीचे इंजन रूम में मेरे जो दोस्त लोग हैं उन लोगों ने तो कुछ छेड़ाखानी तो नहीं कर दी. हाँ भैया कुछ किराया क्या, कुछ ट्रांसफर किया बंकर, पता करो. तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है. Yes or no? This is what we practically do. So I need to find out, have they carried out any transfer of bunkers? I need to find out, has any ballast been shifted? Has any consumption been done excessive? So मुझे ये सारी चीजें पहले पता करनी है. और एक और चीज, क्योंकि ये जनरल कार्गो शिप है तो मुझे कार्गो को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कार्गो इज लायबल टू शिफ्ट ड्यू टू वेदर. तो अगर वो कार्गो शिफ्ट कर गया, स्टार्बोर्ड साइड चला गया, तो मेरी लिस्ट आ जाएगी. सो आई नीड टू चेक द लैशिंग्स of the cargo, general cargo vessel. I need to check the lashings of the cargo. I need to inspect the cargo holds and inspect the cargo to check for any shifting. ये सबसे पहला मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, इज दैट ओके? इसके बाद मुझे सारे स्टेप्स करने हैं एंगल ऑफ लोल तक जाने के लिए, क्योंकि इसका मतलब है फिर मेरा जहाज एंगल ऑफ लोल पे गया है. I have to suspect that, and I have to prove that my vessel is at an angle of load. Then only can I move forward. Straight away नहीं, मैं ballast कुछ नहीं, nothing. पहले तो prove करना है. So ये points हैं, कल करेंगे इसको. It's a long question. There's about 17-20 points हैं और पूरा explanation के साथ. So we'll do that tomorrow. Okay. Okay sir. All right. See you then. See you tomorrow. There are no classes in the afternoon as per the timetable for this week. From next week onwards, we'll have full classes. So that is only for this week.